uh, a boy was running behind the cycle. So here is indefinite article a boy. एक लड़का जो है वो साइकिल के पीछे भाग रहा है. The sun was setting when we reached home. This is definite article because sun we have only one sun. The sun was setting when we reached home. सूर्य छिप चुका था जब हम घर पहुंचे. The courage that he showed surprised everyone. जो करेज उसने दिखाया, करेज इज अ अनकाउंटेबल नाउन. ओके, द करेज दैट ही शोड सरप्राइज्ड एवरीवन. जो साहस उसने दिखाया उसे हर किसी ने क्या था, हैरान कर दिया. नाउ यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. यूजेस ऑफ अ और एन इज डिटरमाइंड बाय द साउंड ऑफ नाउन. अ और एन का आर्टिकल इसका जो यूज़ होता है वो नाउन के साउंड पे डिपेंड करता है. अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. जो वर्ड्स एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बिगिन होते हैं, लाइक हैट, यूनिकॉर्न. सो hat consonant is there, so we will use here a. Unicorn. Now you will get some confused. आप थोड़ा confused हो जाएंगे. Why? Because u is a vowel, right? So if it is giving so if u is given here, why we are using here a article? Why not an? Because we have to check the sound. We don't have to see the letter. Letter नहीं देखना है हमने sound check करना है. This is unicorn. It is giving the sound of y, unicorn. And this u, it must be give the sound of, this is not giving the sound. U means this must be given the sound of a, right? Like umbrella. Okay, so here u is giving the sound of y, and y is not a vowel. Understood? सो एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवल साउंड. और एन होता है जो वोवल साउंड के साथ बिगिन होते हैं, लाइक एन अम्ब्रेला. नाउ यू इज़ ऑल्सो हेयर बट इट इज़ गिविंग द साउंड ऑफ वोवल अम्ब्रेला. अ एन आर. Okay, h is here. H letter is a consonant, but it is giving the sound of r. A sound is here now, so we are using an article. Okay, so we have to take care of the sound only. We have to check the sound of the words. आपने words के sound को check करना है, आपने first letter नहीं देखना है. The uses of a and an is not dependent on the elephant but on the sound that is made. कि a और an कोई अल्फ़ाबेट पे डिपेंड नहीं होता है, ये लेटर पे डिपेंड नहीं करता है. जो उसका बिगनिंग लेटर होता है ये डिपेंड करता है साउंड पे. एन इंजीनियर but a European. Here it is giving the sound of e, but here European. Your sound is here na, European. Since European sounds like it begins with the y, मतलब कि y से शुरू. An umbrella but a university. So you can see letters are same. U is here, but sound is different. Umbrella. When we pronounce the word umbrella, it gives the sound of a, but when we pronounce this word it gives the sound of y, university. So a university and an umbrella, since university sounds like it begins with the y. A house but an r. Letters are same but it gives the sound of house, her, and it gives us a sound of a, r, since r sounds like it begins with the a. A hard working man but an honest man. O sound is here, and her sound is here coming, since honest sounds it like it begins with o. So this is the basic difference. Okay, now place where articles are not used. Places where आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड. आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे नहीं लगाने होते. इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के आगे आर्टिकल्स को यूज़ नहीं किया जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स को. सेकंड, नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है. थर्ड इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में यूज़ नहीं होते हैं, लाइक a and an are not used with the abstract nouns. Articles are not used before names of materials. Materials के आगे भी articles का use नहीं किया जाता है. A duck has webbed feet. These are the examples for them. Okay, now here are the worksheets that you have to do yourself. Okay, so let's see the worksheet number 1. Okay, see, tick mark the correct sentences. Paris is the capital of France, or Paris is the capital of France. Paris is capital of France, or Paris is the capital of France. So this is the correct one. Can you speak Bengali?
Can you speak the Bengali? No need to write the before Bengali. So can you speak Bengali? This is the correct one. Lunch we had at restaurant was delicious, or the lunch we had. So particularly we are mentioning which lunch was delicious, that we had at the restaurant, जो हमने restaurant में किया था. So the lunch, this is the correct one. Okay, same way I have solved rest of the sentences. So sending you some other worksheets, so do it yourself. Okay, thank you.